From the starting, your video and audio both were stopped. Okay. Yes. So the light emitted by laser has very high intensity. So there are two kind of laser. One is continuous wave laser, another is pulse laser. Okay. So continuous wave laser, it has intensity of the order of 10 to the power 5 watt per centimeter square. For pulse laser, you will have the intensity of the order of 10 to the power 22 watt per centimeter square. So continuous wave laser means you will get that intensity or output. But for pulse laser, you will get that output after certain interval of time. But specialty of pulse laser, you will get high intensity of light. You see, you can compare that intensity. So it has very high intensity. Okay. So in research also, you will be use this pulse laser for deposition of thin film purpose. Okay. So because of very high intensity, you can use this pulse laser for cutting and welding purpose. ओके जब आप रिसर्च में जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बी यूज दिस पल्स लेजर फॉर डिपोजिशन ऑफ थिन फिल्म। ओके तो एक हार्ड आपका सॉलिड आपका टारगेट रहेगा, पल्स लेजर सेंड होगा, उस टारगेट के ऊपर गिरेगा और टारगेट से आपका क्या होगा, मटेरियल इवेपोरेट होगा और सामने आपका क्या रहेगा, आपका सबस्ट्रेट रहेगा। तो वहां से आपका हाई मतलब वो सबस्ट्रेट आपका काफी ये है, स्ट्रॉन्ग है, वहां से एटम को इमिट करेगा और वो एटम आपका सबस्ट्रेट में आकर गिरेगा और ऐसे थिन फिल्म डिपॉजिट होगा। ओके सो इट हैज वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज। Sir, can you explain once again? I have some technical issues, sir. Yes. So what I'm saying, you have two kind of laser, continuous wave laser and this another is pulse laser. So continuous wave laser में क्या होगा आपका, you will get always intensity or you will get output for all time. But for pulse laser, you will get that output after certain interval of time. But speciality of pulse laser is the output or the intensity is so large, so high. You see 10 to the power 22 or here 10 to the power 5. So because of high intensity, you can use this laser for cutting and welding purpose. Also in research, when you will go, you will use this pulse laser for deposition of thin film. So you will have laser source, you will have target, solid target. So laser light will fall on that solid target and atom will be evaporated from the solid target, and in front of that there will be substrate. So that atom will come to that substrate and there will be deposition of thin film. So it has very special characteristics. Okay. Yes. Sir, you have told in continuous laser only one line will be there, but in pulse देखो ऑनलाइन नहीं, हर टाइम पे if you see always for all time you will get that intensity. अच्छा हर टाइम के same. Yes, you see along x-axis you have time, so always you will get that intensity. But for laser pulse laser अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग मिलेगा। हाँ, सपोज मान लो 5 नैनोसेकंड एक बार आउटपुट मिला है, फिर उसने स्टोर किया ज्यादा एनर्जी और ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन को स्टोर किया है, फिर 5 नैनोसेकंड बाद निकलेगा, फिर 5 सेकंड नैनोसेकंड, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज्यादा होगा ना। जब आप शटर को बंद कर देते हो, आपका क्या है, number of photon is getting increased and you are storing that. When you will remove that shutter, suddenly it will come. Okay, that's why it has very high intensity. Okay, sir. So means it will take time and it will give more intensity while storing. Yeah. You have, suppose you have laser. Okay, and there will be on shutter. Okay, so shutter will be removed for after certain interval of time, 5 nanoseconds. Okay, so 5 nanosecond it will be closed. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता जा रहा है। 5 नैनोसेकंड तब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन को स्टोर कर रहे हैं ना, सडनली आप जब रिमूव कर दोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन निकलेगा, ऑब्वियसली इंटेंसिटी ज्यादा होगा। बट कंटिन्यूअस वेव लेजर में क्या होता है, आपका शटर नहीं रहता है, तो नंबर ऑफ जो फोटोन जो है वो लेस स्टोर होता है ना, टाइम कम मिल रहा है, तो ऑलवेज निकल रहे हैं ना, इसीलिए इसका इंटेंसिटी कम होता है और इसमें इंटेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि आपका स्टोर करने के लिए टाइम मिल रहा है इसको। ठीक है, मतलब आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम इंटेंसिटी शुड इंक्रीज ना इन अ पल्स, लेकिन यहाँ हम हाइट सेम दिखा रहे हैं।
कहाँ हाइट? ये आपका हाइट है ना? हाँ ये देखो, ये हाइट है आपका, नहीं सर, ये देखो पल्स इसका में। हाइट। हाँ तो ये बढ़ना चाहिए ना टाइम के, मतलब उसका टाइम नहीं मिलेगा टाइम के नहीं, आगे टाइम के साथ नहीं, देखो एक टाइम पे मिलेगा एक हाई इंटेंसिटी, फिर आफ्टर Yes, सर्टेन इंटरवल यू विल गेट हाई इंटेंसिटी, आफ्टर सर्टेन इंटरवल यू विल गेट हाई इंटेंसिटी। तो 5 सेकंड का इंटरवल, सपोज मान लो आपने 5 सेकंड बाद खोले है, तो 5 सेकंड में ये मिलेगा, फिर 5 सेकंड आपने क्या स्टॉप किया है ना, फिर 5 सेकंड बाद खोले हो है ना, फिर पांच Okay, सेकंड sir. बाद है ना, तो ऑब्वियसली Clear. विल गेट दिस Thank काइंड ऑफ। you. हाँ ठीक है, बेसिकली दैट टाइम इज नैनो सेकंड ऑफ कोर्स। ओके ठीक है, तो आप लोग यूज करोगे तो आप लोग और एक्सपेरिमेंटली यूज करोगे, फिर और ज्यादा ये आ जाएगा आपको है ना, एक्सपीरियंस। थर्ड पॉइंट इज स्पेक्ट्रल प्यूरिटी। So those who are from Kerala and Tamil Nadu, you people are enjoying class. If you have any doubt now, you can ask me. Because this is our goal to teach, and you should understand all the things. Okay. Then you will develop some new thing, right? Sir, Huh? your board is Board getting blur blurred. हो रहा है. Yes. Board board blur is हो getting रहा है. blurred. Board. I think focus ये Yes, हो sir. गया. बोर्ड फोकस नहीं हो ओहो, रहा सर, आपने मिटा दिया ना सब कुछ, फोकस नहीं। अच्छा सर ये ऑटोमेटिकली फोकस डिफोकस हो रहा है। अच्छा, ऑटोमेटिकली होता है ना ये? Auto focus mode आपका शायद. अच्छा, ऑटो फोकस मोड। तो अभी भी blurry है, clear हाँ, नहीं है 1 मिनट board. 1 मिनट। ठीक है। Now it is adjusted. Okay, sorry for that. Okay, now third characteristics is spectral purity. Okay, third is spectral purity. So if you see that spreading delta lambda, that is very less, 10 to the power -6 angstrom only. For laser light, delta lambda is 10 to the power -6. What does it mean? It means laser light is almost monochromatic. Is it clear? Or I have to explain? Please explain. Yes. So if you see, दो तरह की है, आपका इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ अगर प्लॉट करोगे, ठीक है, तो अगर सपोज मान लो ऑर्डिनरी लाइट है आपका, तो आपका इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट किस तरह की होगा? इस तरह की होगा, मतलब यू विल गेट मेनी नंबर ऑफ वेवलेंथ, राइट? दैट्स व्हाई इट्स नॉट मोनोक्रोमेटिक। व्हाई इट इज कमिंग एक्चुअली, आपका देखो इंटेंसिटी वर्सेस आपका वेवलेंथ प्लॉट है, तो यू कैन गेट नॉन जीरो इंटेंसिटी फॉर मेनी नंबर ऑफ वेवलेंथ, राइट? Is it clear? This is for ordinary light. Why it is continuous? Anyone? So it's obvious, because suppose this is your atom, this is your nucleus, this is your atom. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट, सपोज मान लो कोई एक्साइट, ब्रह्मा सीरीज की बात कर रहा हूँ है ना, तो फॉर एनी, जब n = 2 पे हायर स्टेट से गिरेगा तो आपको बामर सीरीज मिलेगा, और उसी हिसाब से लाइट मिलता है आपको है ना।
तो जब एक्साइट see, suppose this is your n equals to 1, this is 2, 3, so on, right? So when you are getting when the electron is making transition from 3 to 2, you will get one wavelength. When that electron is making transition from 4 to 2, you will get another wavelength. 5 to 2, you will get another wavelength. So you can get many number of wavelengths for ordinary light. Okay, but for laser light, you have specific two state. So you will get always that light or wavelength because of this emission of that transition from this state to state. So these two states are specific or specified for laser light, but for ordinary light there is no specific transition. So this is, if you see that intensity for ordinary light, so you will get many number of wavelength, but for laser light you will get almost discrete this kind of plot. So spreading the delta lambda means full width at half maxima, that is delta lambda, and that is very small, 10 to the power minus 6. For ideal monochromatic, delta lambda should be 0, but for laser light it is very small. You see, 10 to the power minus 6 angstrom. So that's why it is called almost monochromatic radiation. Is it clear now? Is it clear what I'm saying? Sir, last point, sir. सर आइडियल लेजर हो सकती है सर? Ideal no, because why you are getting delta lambda? Because of Heisenberg uncertainty principle. So there is sir. delta E into delta T equals to H cross, right? So you have always some Yes, spreading sir. of that delta E energy level. So that's why you will get सर रे हाँ it's called a ray ना सर कि मतलब कि del lambda is tend to 0 but it's not going to 0 ना? not I going think- to 0, but you see that term 10 to the power minus 6. Can you imagine Yes, sir. how much small it is? Yes sir, yes sir. Yes. 10 to the minus 16 meters. So small, right? Yes, Sir, sir. Yes. sir, you have told कि मतलब higher energy से lower energy, if electron is being emitted, we will get lasers. Yes. Sir, then after that, what you have told, sir? I didn't. You see, this is how ordinary light you are getting. तो ordinary Okay, light sir. के लिए क्या है आपका atomic transition हो रहा है. तो Yes, sir. लाइट कब मिलता है? जब बामा सीरीज में. बामा सीरीज मतलब जब आपका n equals to 2 पे हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है. So n Okay. 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2. So for different state or different transition, you will get different wavelength. So that's why for ordinary light, you will get many number of wavelength. But for laser light, you have two specific energy level, E1 and E2. And laser light is always emitting because of transition, atomic transition from E2 to E1. So this level is fixed. Only this transition is happening. That's why you are getting delta lambda is so small. And why it is not 0? Because of Heisenberg uncertainty principle. So there will be always some spreading of energy level. That I'll come in detail. The E1, E2 represent means transition from n equals to 2 to 1. लेजर हाँ, जब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे. जस्ट मैं इतना sir. बता रहा हूँ, फिर आगे मेरे को प्रोसीड करने दो. ठीक है? Okay, sir. ठीक है. Is it clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now we'll go. So to understand that production of laser light, we must need to understand that phenomena involved in light matter interaction. So first is spontaneous emission. The next topic. So spontaneous emission.
What does it mean? Suppose you have two level, okay, E1 and E2, okay, and here number of atom is N1, here number of atom is N2, okay, and E2 is greater than E1. So it means E1 is ground state and E2 is excited state, and the atoms are in excited state, and let us assume that tau sp is the lifetime of E2 level. ठीक है, तो एटम का कहाँ पे है आपका एक्साइटेड स्टेट पे है. सो देयर विल बी atom will jump from E2 to E1, right? So atoms, when the atoms are in excited state, so they will make transition from E2 to E1, right? Within this time, tau sp. So when there is a transition from E2 to E1, so there will be obviously there will be emission of photon, right? Is it clear? So this phenomena is happening spontaneously, right? So the energy of this photon will be h nu, and that will be exactly equals to E2 minus E1. Is it clear? So you have two level, E1 and E2. Number of atom here N1, number of atom in E2 is N2. So when the atom are sitting at excited state, so within a very short time, the time is tau sp, there will be transition from E2 to E1, and when the atoms are making transition from E2 to E1, you will get photon. They will produce photon, and the energy of this photon will be h nu, and that will be exactly E2 minus A1, energy difference between two level. So why there will be emission of photon, anyone? Due to energy Change in energy. Exactly, energy conservation. So when that atoms are here, it has large energy, right? So when it will make transition to E1, it will have low energy. So E1 plus h nu should be equals to E2 due to energy conservation, right? Very simple thing, and very good who has given answer. Is it clear? Next is stimulated emission. Okay. So in stimulated emission, again you have same level E2, E1. Okay. Here N2, N1. Okay. So before going to this stimulated emission, let me explain in detail about this spontaneous emission. Okay, I'll discuss more about this. So that rate of spontaneous emission will depend on what factor? So you can write rate of spontaneous emission will be proportional to what? Number of atom in E2, right? जितना number of atoms E2 में होंगे उतना number of transition ज़्यादा होगा. If number of atoms in E2 is more, there will be more number of transition here. Okay, so rate of spontaneous emission will depend that number of atom in level E2, and that is N2 here I have represented. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we see. So N2 is number of electrons in E2 level, right? Yes, number of atoms in E2 level. Atoms. Yes. So now we see the intensity will never build up because of spontaneous emission. Why?
intensity will never build up because of spontaneous emission. So why? That's why we wrote that stimulated emission, because although you are getting photon, now we see. I'll redraw this diagram again. तो tau sp का मतलब क्या है? कैसा नहीं कि tau sp टाइम में सारे एटम क्या हो जाएगा, सारे एक साथ E2 E1 में आ जाएगा. तो इसमें क्या होगा, विद इन दिस टाइम ऑल एटम विल जम्प टू हेयर. बट क्या होगा, सपोज मान लो एक ट्रांजिशन अभी हुआ है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक एटम का और ट्रांजिशन होगा, फिर कुछ टाइम बाद एक और ट्रांजिशन होगा. बट दिस टाइम इज नॉट नोन. बट क्या है, सारे ट्रांजिशन एक साथ नहीं हो रहा है. तो सपोज मान लो एक ट्रांजिशन हुआ है, उसका एक फोटोन इमिट हुआ है. आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल गेट अनदर फोटोन. ओके, आफ्टर सर्टेन टाइम यू विल गेट अनदर फोटोन. ठीक है, तो सारे जो फोटोन इमिट हो रहे हैं इनका कोई फेज कोरिलेशन नहीं है, सारे का फेज क्या है, अलग अलग है. ठीक है. ऑल्सो so they are random in time, they are random in time, also they are random in direction. मतलब क्या है, सपोज मान लो, हम एग्जांपल देता हूँ, एक सपोज मान लो इस डायरेक्शन में इमिट हुआ है, एक आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा. मतलब हर डायरेक्शन में पॉसिबल है. सर सो कॉज ऑफ रैंडम मतलब जैसे कि सपोज मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, स्मॉल नंबर लेके बताता हूँ. सपोज मान लो एक आपका इधर इमिट हुआ है, तो वेव इक्वेशन इसका क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव. ओके, इधर इमिट हुआ है तो उसके लिए इसको y1 मानो, इसको आप y2 मानो. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. मैं टाइम सेम ही ले रहा हूँ. तो इन दोनों का जोड़ोगे तो फिर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना. जब रिजल्टेंट y लिखोगे आप कितना मिलेगा, y1 प्लस y2 जीरो मिलेगा, राइट. तो अगर रिजल्टेंट वेव आपका जीरो है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा. मतलब इस वे में क्या हो रहा है, उसका इंटेंसिटी बिल्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि दे आर रैंडम इन टाइम एंड दे आर रैंडम इन डायरेक्शन आल्सो. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? यस सर, दिस पॉइंट इज क्लियर. सर एक छोटा सा था सर, जैसे कि टाइम लाइफ टाइम ऑफ E2 एक फिक्स कोई टाइम होगा ना. हाँ, दैट इज वेरी स्मॉल, 10⁻⁸ सेकेंड. बट ओके क्या है, सर. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे एटॉम इसी टाइम में, मतलब उस टाइम में स्पेसिफाइड टाइम में ट्रांजिशन होगा, ऐसा नहीं. वो क्या है, हाँ, विद इन दिस टाइम ऑल एटॉम विल मेक द ट्रांजिशन, बट एट व्हिच टाइम वी डोंट नो. बट ये श्योर है कि टाउ स्पी के आसपास होगा. जैसे मैं बताता हूँ, ह्यूमन बीइंग का एवरेज लाइफ है 60 ईयर्स, तो कोई 80 ईयर्स भी बच सकता है ना, कोई 40 ईयर्स भी बच सकता है ना. एवरेज है वो, ठीक है. एवरेज, इट इज एवरेज. ओके सर. और एक डाउट है मुझे. हमने इसके पहले देखा था, उसमें हमने देखा कि लेजर लाइट इज अ डायरेक्शनल, मतलब उसमें डाइवर्जेंस नहीं होता. लेकिन यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि हर एक डायरेक्शन में वो एमिट होता है पॉसिबल, इसके वजह से उसका इंटेंसिटी जीरो होता है. तो दोनों कैसे? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट्स व्हाई दैट टर्म स्टिमुलेटेड इमिशन. तो स्टिमुलेटेड इमिशन के कारण ही आपका क्या होता है, इंटेंसिटी बिल्ड होता है ना. इसका कोई रोल नहीं, ये तो आपका जीरो दे रहा है ना, दे आर गिविंग जीरो इंटेंसिटी, राइट. सो व्हाट एवर इंटेंसिटी यू आर गेटिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन. तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, स्टिमुलेटेड इमिशन को आपको ज्यादा करना पड़ेगा और इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन को कम करना पड़ेगा. So that's why when I'll discuss that Einstein coefficient, that time I will come to that conclusion that you will never get X-ray light, because for X-ray radiation the spontaneous emission will be dominant. We'll derive that. But for microwave, for IR, the stimulated emission is dominant. Okay. So for laser light, you have to have more number of stimulated emission. Okay. That's why in the beginning I told that stimulated emission is playing significant role here. Sir. Yes.
सर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है बट एटॉम सर कैसे ट्रांजिट सेम इलेक्ट्रॉन ही है वो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही है। ओके जब हम लेजर लाइट सॉरी हीलियम नियॉन लेजर या रूबी लेजर डिस्कस करेंगे उस टाइम पता चलेगा। चलो नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट इज बी राइट, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। So stimulated absorption means suppose you have again two level E1 and E2. Okay, here number of atom N1, N2, and atoms are where in the ground state. Okay, now if you incident photon on the system and the energy, so if you incident that photon, it has energy, the energy of this photon h nu, that is exactly matching with E2 minus E1, energy separation between these two level. Okay, तो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का आपने फोटोन इंसिडेंट किया है, आपका ग्राउंड स्टेट पे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स है ना, यहाँ पे इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या हो सकता है कि ये जो फोटोन है इस जो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम्स है क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एंड इट विल गो टू दैट हायर स्टेट। इज इट क्लियर? सो व्हेन आई वाज साइनिंग दैट फोटोन हैविंग energy value that is matching with the energy separation between these two levels, then atoms sitting at ground state, it will absorb this photon and it will make transition from ground state to excited state. So this process is known as stimulated absorption. Is it clear? Is it clear? So 1 second, please. Please explain once again. Explain. Yes, sir. Yes. So what I'm saying, आपका ग्राउंड स्टेट पे जो एटम्स है इॉन पे है ना, ठीक है, आपने फोटोन इंसिडेंट किया है ना, इसका एनर्जी जो है इस न्यू है, और दिस एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू E2 minus E1, E2 minus E1. Then what will happen? The atom sitting in ground state, it will absorb this photon and it will make transition from ground state to excited state E2. Okay, so this process is known as stimulated absorption, but the energy value should be equals to that energy separation between these two levels, E2 minus E1. Okay, and the rate of stimulated absorption is proportional to number of atom in the ground state as well as energy density of incoming photon. So suppose the energy density of incoming photon is E nu. So rate of stimulated absorption is proportional to A non U nu. Okay. So again, you see, so if there is a stimulated absorption, so there will be no emission of photon, right? So we don't want stimulated absorption also, because this will decrease the intensity of laser light actually. If you have more number of stimulated absorption, then it will decrease that intensity of light. Is it clear? हाँ? Sorry? Sorry, your voice is not clear. 1 minute.
Yes, can you tell me now? सर UR क्या आप बता रहे अच्छा, E ऑफ आर नहीं है, E ऑफ न्यू है। E ऑफ न्यू है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटोन, आपका E ऑफ न्यू है एक्चुअली। न्यू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटोन, न्यू मतलब क्या है आपका? एनर्जी डेंसिटी इज डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ओके ओके सर। तो इसको इंटेंसिटी इसका डिक्रीज कैसे हो रहा है? हाँ, डिक्रीज देखो, आपका फोटोन जा रहा है, ये आपका इनकमिंग फोटोन है, तो आपका एक्चुअली ये इनकमिंग फोटोन को इस एटम क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करके यहाँ आ रहा है ना? तो ये तो फोटोन को वैनिश कर रहे हैं ना, नंबर ऑफ फोटोन को क्या कर रहे हैं, वैनिश कर रहा है नहीं? ओ यस सर, यस सर। हाँ। आपको तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा चाहिए है ना? हाँ, ये तो ऑब्जर्व कर रहा है सर। सर आपने UR को बोला एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। हाँ, ई और नहीं है, ई ऑफ न्यू है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इनकमिंग फोटोन, जो आपका फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसका एनर्जी डेंसिटी है, ई ऑफ न्यू है वो, ठीक है। एंड लास्ट फेनोमेना इज स्टिमुलेटेड emission. Okay, so again same diagram, E1, E2, N2, N1. Okay. यहाँ पे भी कुछ है. So if you are signing photon on the system, okay, so what will happen? That atom sitting at E2, so if you, suppose you are signing this photon to this system, so again same diagram, I am not explaining it. If it has intense energy h nu, that is making that is exactly equals to E2 minus E1, then what will happen? The atom sitting in E2, that photon will stimulate these atoms and it will make transition to the ground state. सर अपोजिट भी पॉसिबल हो सकता है ना? हाँ, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी दोनों का बराबर है ना? You have equal probability of stimulated absorption as well as stimulated emission. Probability is same. Okay, so what is happening when you are signing this photon, atom sitting at excited state, this incident photon will stimulate this atom and it will come to that ground state. So when it will come, suppose one transition I am showing here. So after this transition, you will get output, you will get 2 photon. Okay, so this photon is stimulate this process. So due to this, atom will make transition from here to here. So due to this transition, you will get 1 photon, and you already have 1 photon. So output you will get 2 photon. Is it clear? Is it clear what I'm saying? सर हर केस में से मतलब 2 ही क्यों? हाँ, देखो, एक तो आपका इनकमिंग है ना, और एक जो इनकमिंग फोटोन है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है ना? तो जब स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से इसका ट्रांजिशन होगा, तो एक तो आपका ऑलरेडी है और एक आपका जब एटम हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे ट्रांजिशन होंगे तो एक फोटोन और इमिट होंगे ना. ओके, क्लियर. ओके, सो इसी, सो दिस 2 फोटोन मतलब 2h nu एमिट हो रहा है. हाँ, एमिशन 2h nu फ्रीक्वेंसी का एमिशन हो रहा है. हाँ, एक तो आपका इनकमिंग था, एक आपका इससे. So you are getting 2 photons, right? So these 2 photon actually producing at the same time and they have same phase. They are producing at the same time and they have same phase. Okay, so they are producing at the same phase. What does it mean? So suppose एक wave को आप लिखो same phase and same time. What does it mean? So एक के लिए अगर y1 मानो wave equation का आपका solution अगर ये है,
y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो दूसरे का जो आपका ये है इक्वेशन वो भी सेम होगा, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग एट द सेम टाइम एंड दे हैव सेम फेज। ओके, सो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो ये कितना हो जाएगा 2a sin ओमेगा t प्लस फाइव। Now see, amplitude is becomes twice, right? So we know that intensity is proportional to amplitude square, right? So यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 4 times हो जाएगा। Is it clear? Yes, sir. So you are getting 2 photons. They have that solution of this photo, you know that wave equation, right? y1 equals to a sin omega t plus phi. So 2 photon के लिए जब रिजल्टेंट देखोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, amplitude become twice. Okay, so you will obviously you will have large intensity. And why they are highly directional? Anyone? Why they are highly directional? Because 2 photons are emitted at the same time, right? At the same point. So इसका जो वेव फंक्शन होगा दोनों का जो वेव फंक्शन होगा वो ओवरलैप करेगा। So the wave function of 2 wave will be overlapped. So it means a single wave function is defining two wave, right? So single wave function can define only one direction, right? So that's why they are propagating in a same direction. So that's why they have very less divergence. Is it clear? Since they are producing at the same time and same point, so their wave function will be overlapped. What does it mean? So for 2 wave function, you will have only one, 2 wave, you will have only one wave function, and a single wave function can define only one direction. What does it mean? For both wave or for both that radiation, you will have only one direction. So that's why that laser light is highly directional. Is it clear? So mean same phase में है इसलिए highly directional. देखो दोनों की जो दोनों का जो दे आर प्रोड्यूसिंग एट द सेम पॉइंट। व्हाट डज इट मीन? एक का वेव फंक्शन अगर इस तरह से है तो दूसरे का इस तरह से, दोनों का वेव फंक्शन जो होगा ओवरलैप हो जाएगा, है ना? Yes, तो ओवरलैप का मतलब क्या है, एक आपका दोनों का जो वेव है एक आपका सिंगल वेव को डिफाइन कर रहा है, और सिंगल वेव क्या करता है, एक ही डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता है ना? yes sir. So that's why laser light is highly directional. Is it clear? Now is it Yes, clear? Yes, sir. Yes, Now, sir. rate of stimulated emission किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Number of photons. Into an energy. Exactly. So rate of stimulated emission is proportional to N2 and E of nu, energy density of incoming photon. Okay. So देखो, now the question is valid who has asked that when you are signing photon, there will be stimulated absorption as well as stimulated emission. Okay, and the probability of these two phenomena are same. मतलब stimulated absorption के लिए जितना probability है, stimulated emission का भी probability same है। फिर आपका इंटेंसिटी कैसे बिल्ड होगा, है ना? क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी तो दोनों का सेम है, तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन तो आपका इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है, देन हाउ विल गेट हाई इंटेंसिटी? एनीवन? हाउ विल गेट हाई इंटेंसिटी? Sir, N2 की value अलग से जा रही है। Exactly, because rate equation is depends that rate of stimulated emission is depends on N2 as well as U nu, right? And stimulated absorption N on U nu, right? तो N2 मोर नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, N2 को ज्यादा चाहिए। तो जब N2 ग्रेटर देन N1 है ना, इसका मतलब क्या है, इट मींस number of stimulated emission is high as compared to stimulated absorption. So this
condition is known as population inversion. Is it clear? सर Yes. अगर नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन का, तो रेट भी सेम होना चाहिए ना, रेट भी वैसा ज्यादा होना चाहिए ना। रेट स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा ही चाहिए ना मेरे को, कम जितना स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कम है वो हमारे लिए बेहतर है ना? इज इट क्लियर? कम है इज इट क्लियर? So एक बार स्टेटमेंट रिपीट करिए अभी। yes, yes, you see that rate, if you remember, for stimulated emission the rate was how much? Depends upon this factor, right? And for stimulated absorption this, right? आप rate of stimulated emission मतलब क्या है? The stimulated emission is ज्यादा हो रहा है ना? अगर सपोज मान लो stimulated emission का रेट आपने बढ़ाया, इसका मतलब क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस ज्यादा हो रहा है। तो स्टिमुलेटेड प्रोसेस यदि अगर ज्यादा है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन इज लार्ज, इज नॉट इट? एंड हमको चाहिए क्या? वही चाहिए, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हमको कम चाहिए। तो स्टिमुलेटेड इमिशन बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर है? एक तो एनर्जी डेंसिटी है, दोनों के लिए है ना, वो तो आपका सेम है। एक फैक्टर है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो स्टिमुलेटेड इमिशन ज्यादा होगा। और स्टिमुलेटेड इमिशन एक्चुअली क्या करते हैं? आपका लेजर लाइट प्रोड्यूस करता है। तो लेजर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए आपको n2 को n1 से ज्यादा होना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉपुलेशन इन्वर्जन। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। और आपने इक्वल भी बोला था ना, दो चीजें। प्रोबेबिलिटी इक्वल है, सपोज प्रोबेबिलिटी इक्वल है, बट प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? सपोज मान लो आपका दो है, एक आपका क्या है, यहाँ पे एटम है, एक आपका यहाँ पे एटम है। अगर दोनों का एटम नंबर सेम है तो क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ ट्रांजिशन होगा। बट अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या है? जो प्रोबेबली जो रेट ऑफ ट्रांजिशन डिपेंड क्या फैक्टर के ऊपर है? इसके ऊपर भी हो रहा है, इसके ऊपर भी हो रहा है। अगर दोनों का नंबर सेम हो जाएगा तो दोनों प्रोसेस का आपका ये जो है प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगा, है ना? ओके सर। जैसे अगर दोनों सेम हो जाएगा तब तो कोई मतलब नहीं, उसीलिए आपको पॉपुलेशन इन्वर्जन मस्ट होना ही पड़ेगा। यस है सर। ना? Otherwise, that's why when you are using that laser, you have some special materials. From there you can get that laser. From all material you cannot get. Now, next topic. Yes. So stimulated emission में हमें finally एक ही wave function मिलेगा overlap के बाद। हाँ, एक वेव फंक्शन मिलेगा। दो जो आपका वेव आउटपुट मिला है, दोनों का वेव फंक्शन एक ही होगा, क्योंकि दोनों का वेव फंक्शन ओवरलैप होता है। ओवरलैप मींस इट मींस इट हैज सिंगल वेव फंक्शन। कितने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब ट्रांजिशन कर रहे हैं उसके हाँ, बाद if they are producing at the same time at same point, their wave function will be overlapped. Okay. Now next is components of laser. अच्छा, समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? Those who are from Kerala and Tamil, you people enjoy? Is it okay for you? Is it okay? हाँ. Now we'll discuss about that component of laser. So first is active medium. Okay. On the right hand side, I will draw that all component. We have two mirrors. We have two mirrors, M on
its reflectivity is 100%. You have another mirror, M2, its reflectivity is 98%. And this is your pumping source. This is your pumping source. This is active medium. So you have active medium. Here you have energy level E1 and E2. Okay. Now pumping source. Pumping source can be optical pumping, and now I'll come optical pumping and electronic pumping. So what is the role of pumping source? It will emit some radiation. So first, what will happen? Pumping source will pump the atom from E1 to E2. Now, when the atoms are in E2, what they will do? They will make what they will do? They will make spontaneous emission, right? So first process will happen spontaneous emission. So spontaneous emission के कारण क्या हो सकता है? On photon will emit. Okay. So this photon, so due to this spontaneous emission, so what is happening? Pumping source will pump the atom from E1 to E2. Now, when the number of atoms in E2 is large, so there will be spontaneous emission. So first emission will happen, that is spontaneous emission. So it will come to this, towards this mirror. Now this mirror has 100% reflectivity. What does it mean? So when the photons is incident on this, it will again reflect back. Okay. Now this photon will go towards this. Now what will happen? This photon will make stimulated emission. Okay, stimulated emission. So due to this, you will get 2 photons at the output. So first process is happening spontaneous emission. So this photon is incident on this mirror. Because of 100% reflectivity, it will reflect back. And when it will reflect back, it will make stimulated emission. And due to this, you will get 2 photons at the output. And these 2 photons will go towards this. Again, these 2 photons will reflect back, and it will again do these 2 photons will make stimulated emission. So at the output, you will get 4 photons. Okay, this 4 photon again will make stimulated emission. At the output, you will get 8 photons. This 8 photon again will make stimulated emission. You will get 16 photons. So within a fraction of time, you will get large number of photons inside this system. सर सर ये जब 98% से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो जो ऊपर से नीचे आ गए हैं तो एब्जॉर्प्शन भी तो no, these are not 100% reflectivity means they will not absorb anything. So 98%, what is the meaning of 98%? If 100 number of photons are incident here, so 2 will go, you will get 2 photons outside of this, and 98 number of photons will again reflect back. Yes, 98 will reflect back, but sir जो E2 से E1 में आए हैं इलेक्ट्रॉन्स वो एब्जॉर्ब भी तो कर सकते हैं जो एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करते हैं. उसीलिए क्या है आपका पंपिंग सोर्स में पहले क्या, पंपिंग सोर्स का क्या रोल है? E1 से E2 में पंप करते हैं. और कब तक पंप करेगा? जब N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, फिर क्या होगा? उसके बाद ये प्रोसेस होना स्टार्ट होगा. ओके सर. You are correct. You are getting stimulated absorption, but I am not showing this because this is actually decreasing that intensity. But when N2 is greater than N1, that time that stimulated emission is dominant. Okay. So because of this stimulated emission and this role of this cavity, within a fraction of time, you will get many number of photons inside this cavity. So first, what is the active medium? Now we'll discuss. So active medium means, you write this definition.
collection of atoms or ions or molecules. So can you just repeat, sir, once more? Collection of atoms or ions or molecules in which atomic transition takes place to produce laser light. Is it clear? So after transition? Atomic transition takes place to produce laser light. Sir, can you please explain? Can you please repeat that from the starting? Collection of atoms or ions or molecules in which atomic transition takes place to produce laser light. So active medium can be solid or it can be liquid or it can be gas. Okay. For example, we have ruby laser. Okay. Here active medium is chromium 3+ ion. You have helium neon laser. Here the active medium is neon. Okay. Sir, Yes. pumping source emits some radiation and transition takes place from E1 to E1 to E2. Where? Diagram, sir. Yes. So your pumping source, what is pumping source is doing? Pumping source pump the atom from E1 to E2. Okay. Now, so when N2 greater than N1, atom will make first will make spontaneous emission, and this will emit one photon. This photon will reflect back by this mirror, and after that, because of stimulated emission, you will get 2 photons. They will again reflect back, and again due to stimulated emission, you will get 4 photons. They will again reflect back. Again, they will make a stimulated emission. Then you will get 8 photons. Then further stimulated emission, 16 photons, like that. Is it clear now? Yes, sir. Thank you, sir. Is it clear now? Yes, sir. Yes. Okay. Now you have another components, that is you have pumping source. So why? So for laser light, you must need to have N2 greater than N1, right? Okay. So you must need to have N2 greater than N1 for laser light, right? So suppose you again the same diagram, E1 greater than E2, sorry, E1 and E2. So it is essential to pump the atom from E1 to E2, right? Okay. Yes. It is essential to pump the atom from E1 to E2, right? So pumping source can be 2 types of pumping. One is optical pumping. So what is optical pumping? You are signing some photon. Okay. So this photon will this system will absorb this photon and it will make transition.
you can pump this atoms by using photon or light. Another is electron bombardment or electronic pumping. So electronic pumping means you are bombarding, you are sending high energetic electron, and the kinetic energy of this electron will be absorbed by the atom sitting at the ground state, and it will make transition to higher state. Okay. So for electronic pumping. So for electronic pumping, you are using a high energetic electron. High energetic means it has very high kinetic energy, and this high energetic electron will give this energy to atom sitting at the ground state, and this atom will jump to E2. Okay. In helium-neon laser, we will use the that electronic pumping, and for ruby laser, we'll use that optical pumping. ऑप्टिकल वन इज तो सिंपल वन, E1 से E2 ट्रांजैक्शन हो रहा है विदाउट, दोनों में E1 से E2 हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक में आपका इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ऑप्टिकल में आप जस्ट लाइट को यूज कर रहे हो। ओके सर, यस, ओके। नाउ an important parameter, on important thing, that is Einstein coefficient, and that is actually very significant. That thing actually, that Einstein coefficient will tell you which material is suitable for laser light. So shall I continue? Yes, sir. Okay. So Einstein coefficient is very important for your exam purpose also. Okay. So again I will use same diagram, E1, E2, N1, N2. So write this thing, N1 number of atoms, per unit volume, okay, in E1, and N2 number of atoms per unit volume in level E2, and E of nu, not R. This is energy density of incident light. Okay. Now number of simulated absorption okay, per unit time, per unit volume.
Okay, that is basically denoted by dN by dt. Okay, and you can say stimulated absorption. Okay, that will be proportional to what? That will be proportional to what? N1 E of nu, right? No. So number of rate of stimulated absorption will be proportional to N1 U nu. Okay, that we have already discussed. Okay, so now dN on by dt, okay, will be equals to that rate is basically stimulated absorption. Stimulated absorption equals to how much? B on to N on E of nu, where B on 2 is the Einstein coefficient of stimulated absorption. Now I have used minus sign. Why there is minus sign? Atom. Yes, as the time progress, number of atom is getting reduced. Right? From N. From N on, right? So rate of stimulated absorption will be minus B on to N on and U nu. Okay. Now similarly, rate of spontaneous emission will be how much? It will be plus. Proportional to N2. So rate of spontaneous emission. Of course, it will be proportional to N2, right? Right? And it is independent on energy density. Now, dN2, yeah, yes. So you said that minus sign is denotes that the decreasing number of electrons. Atoms, yes. As the time progress, see, left hand side is dN on by dt, right? Yes, sir. तो इसको कैसे लिखोगे? Number of atom at NF minus NI by TF minus TI, right? Now time final time is TF, initial time is TI. So time final time obviously is greater than initial time. तो जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, अब इनिशियल नंबर ऑफ एटम ऑब्वियसली ज्यादा होगा. ये आपका एनआई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियली कितना नंबर ऑफ एटम ग्राउंड पे है. अब जैसे आपका ट्रांजिशन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, तो dN by dt को क्या कैसे लिखोगे? NF minus NI by TF minus TI. अब NF देखो इससे NI से कम होगा, तो ऑब्वियसली ये जो नंबर मिलेगा क्या मिलेगा? नेगेटिव, बिकॉज TF is greater than TI but NF is smaller than NI. So that's why you will get minus here. Okay, and you can explain right, like as the time progress, number of atom is decreased due to that stimulated absorption. So that number of atom will be decreased of level E1. Now dN2 by d2 for stimulated spontaneous emission will be how much? It will be minus A2 on N2, right? A2 on N2. Again, minus sign is because it is decreasing that number of atoms. Now, can you make integration like dN2 by N2 equals to minus A2 on dt? Okay, and I will use, so initially let us assume in level E2 that initial number of atom is N2 0,
and final after time t, number of atom is n to t. Okay, so here the time limit is 0 to t. Okay, so when time at t goes to 0, number of atoms is n to 0. At time 2, that is n to t. Now if you calculate it, the very simple integration, if you make that integration, if you do this integration, you will get n to t equals to n to 0 exponential minus a to 1 t. Okay, is it clear? So if you make it will give you ln n2, right? Now if you substitute this limit, you will get ln n to t by n to 0. Okay, and this side on the right hand side you will get minus a to 1 t. So if you do solve this, you will get n to t equals to n to 0 into exponential a to 1 minus t. So if you plot this, you see, if you plot it n2 versus time, so it will be like this, right? So initially that number is n to 0. Now see, this is exponential decreasing, right? So now at time t, now when the time t equals to 1 by a to 1, when the time t equals to 1 by a to 1, you will get n to t equals to how much? N to 0 by e, right? Yes, sir. And this time, the time at which the number of atoms reduced by a factor of 1 by e, this time is known as the lifetime, whatever we have discussed, tau sp. The time tau sp is the time at which the number of atom is in level E2 is reduced by a factor 1 by e. Please note that the exponential function can never be 0. It can be 0 only when the time is infinity, and infinite time is impossible. सर Okay. ये नीचे ग्राफ के नीचे आपने क्या मतलब टो लिखा है? हाँ, t is equal to a21 n2 वर्सेस टाइम का प्लॉट किया, तो ये आपका n2t वर्सेस टाइम का प्लॉट करोगे तो फिर आपका यहाँ पे क्या है? हाँ, एक्सपोनेंशियल, देखो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिके होगा नंबर ऑफ एटम ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन, राइट? सो n2 will decay with time. Now at the time I have defined, that is t equals to, when you will substitute here t equals to 1 by t1, 1 by a21. So when time t equals to 1 by a21, so a21 divided by a21, this will be cancelled. So you'll get simply exponential minus 1. What does it mean? It means n to t, when time is 1 by a21, you will get that number is n to 0 divided by e. So that time I'm substituting here 1 by a21. So this will give you that number of atom, that will be how much? n to 0 divided by e. So that is basically tau sp. So tau sp, these things is very important for your exam purpose. Tau sp is nothing but 1 by a21. Okay. So tau sp is 1 by a21. Please remember, when I'll solve the problem, then it will be useful. Okay. Yes. Shall I erase? Yes, sir. Now, next part, can you please tell me the rate equation for stimulated emission? Proportional to N2 and energy density. Exactly. So rate equation for stimulated absorption is proportional to what? N2 and E of nu, right? So dN2 by dt, okay, will be N2 E of nu
or equals to minus B21 N2 U nu. B21 is again Einstein coefficient of stimulated emission. Okay. So B21 is your Einstein coefficient of stimulated emission. A21 was Einstein coefficient of spontaneous emission. Now at thermal equilibrium, rate of upward transition will be equals to rate of downward transition. At thermal equilibrium, rate of upward transition will be equals to rate of downward transition. So upward transition किसके लिए हो रहा है? Upward transition is only because of stimulated absorption, and downward transition is happening due to spontaneous emission as well as stimulated emission. So at thermal equilibrium, both will be same. So if you equate it on the left hand side, due to stimulated absorption, it will be minus N on E of nu, and that should be equals to, and of course you will have minus B on 2 N on U nu. On the right hand side you will have minus A2 on N2 minus B2 on N2 U nu. Okay, is it clear? So at thermal equilibrium, this is your upward transition, this is your downward transition. So you can cancel minus sign from both sides, and if you bring this term in this on the left hand side, you will get B on 2 N on minus N2, right? B2 on N2 minus. सर yes. तो ये क्या है सर? अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल्स टू एट थर्मल इक्विलिब्रियम अपवर्ड ट्रांजिशन किसके लिए हो रहा है? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए हो रहा है, यस है ना? सर. एंड डाउनवर्ड ट्रांजिशन ड्यू टू स्पॉन्टेनियस emission and stimulated emission. So at thermal equilibrium, both are same. So this stimulated Downward absorption. is that stimulated emission and as well as stimulated absorption, no? Downward one. Downward A1, spontaneous A2 emission and stimulated emission. Sir, A1, A21, N2 का term. So this is B on to N on U nu. This is due to stimulated absorption, and A2 on N2 spontaneous emission, B2 on N2 U nu stimulated emission. So at thermal equilibrium, upward transition should be equals to downward transition. So it means rate of stimulated absorption should be balanced with spontaneous emission and stimulated emission. Okay, now if you bring second term, and you can take U nu common. So if you solve it, you will get A2 on N2 divided by, you will get A2 on N2 divided by B on to N on minus B2 on N2. Okay. Now if you take common, if you take B2 on N2 common, so you'll get A2 on N2 divided by B2 on N2 N on by N2 B on 2 divided by B2 on minus 1. Okay. Now this N2 will be cancelled. Okay. Now according to Boltzmann Distribution Law, suppose you have two levels, E1 and E2. So at temperature T, the number of atom N2, here number of atom N0. So according to Boltzmann distribution law,
if you have two level system at temperature T, so N2 by N1, this should be equals to exponential minus E2 minus E1 by KT, KBT, where KB is Boltzmann constant. Okay, so it means N1 by N2, that should be equals to exponential E2 minus E1. Okay, so this minus will be vanished when we will make reverse. So N1 by N2 will be simply E2 minus E1 by KT, and E2 minus E1 is nothing but H nu by KBT. Okay, so this thing I will substitute here, N1 by N2 here. So what will this side one? Huh? This side one, what I've explained is N1 by N2 equals to E H nu by KBT. अच्छा, E2 minus E1 equals to H nu, na? Yes. Okay. Now ये expression कहाँ से आया था? That's what I said. No, these things will be useful. Boltzmann distribution law you'll learn in thermodynamics and statistical physics. Okay, sir. Okay, sir. In the beginning, I told you. Okay. So time is already 9:22. I should stop here. Next class, I'll do next of the part and I will solve problem. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir.